That's what I mean. You must lady. लोग पूछते थे कि इस बार आप क्या अलग करने वाले हैं? बोला अलग क्यों करूंगा मैं? कैरेक्टर है, मौसम थोड़ी है कि अभी बदल जाएगा। बहुत टाइम बाद मिले। हाँ। एक तो तुम लेट आए। 20 जैन को मिशन मजनू आया था जिस दिन मेरी बेगम का बर्थडे था। तो उस दिन पे मेरा हाँ मिशन मजनू, और उसमें हीरोइन का नाम नसरीन था जो मेरी बेगम का नाम है। Hi, I'm Kubra Singh. Hi, my name is Riddhi Dogra. Hi, this is Manvi Kavli. Hi, I'm Sharik Hashmi. हाय, मेरा नाम है नवीन कस्तूरिया। 2, 3, stay. Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and आज मेरे साथ इस राउंड टेबल पे है ना ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स जिनको मैं कहूँगा 2023 में ये छा गए थे OTT पे एंड नवीन जो आज पूरे राउंड टेबल आपको पता चल ही जाएगा why नवीन is getting so much of importance. But yes, let me start by saying this. नवीन, शरीफ भाई, मानवी, रिद्धि and कुबरा. Hi guys. Thanks, Murtaza. Thank you कुबरा. I just आगे मत बोलना कुछ भी शब्द बोलना. I know what I'm going to say. That's why. ये एंड और ये एंड मेरा तो चल रहा है भाई। ये एंड और ये एंड मेरे को चल रहा है। हाँ, नहीं यहाँ सबके साथ ठीक हो, ठीक है? ये दोनों के साथ मेरा चल रहा है। So of course amazing 2023 for all of you. अगर आप लोग को खुद को समअप करना होगा साल तो आप कैसे करेंगे? Who wants to go first? आप हाँ, आखिर में आया हूँ। जो सबसे लेट आता है उससे स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, क्यों कैसा रहा साल? पूरा साल 2023. If you had to describe it in not more than a few words. अच्छा मतलब अच्छा रहा यार। शुरुआत पिक्चर से हुई थी। आई थिंक दिसंबर एंड में वो आया था और अंत एस्पिरेंट से हुआ है। सो हाँ बीच में कुछ भसोड़ियाँ हुई हैं बट अंत भला सब भला। सो इट्स बीन अ गुड ईयर। Right. शरीफ भाई क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए भी 23 बहुत खूबसूरत रहा। नए साल की शुरुआत में ही मतलब 20 जैन को मिशन मजनू आया था जिस दिन मेरी बेगम का बर्थडे था। तो उस दिन से मेरा हाँ मिशन मजनू, और उसमें हीरोइन का नाम नसरीन था जो मेरी बेगम का नाम है। तो ये एकदम ही मस्त चीज़ थी। फिर अफवाह, ज़रा हटके ज़रा बच के, तरला, ये सब, तरला स्पेशली मेरे लिए बहुत ख़ास फिल्म है। तो 23 हैज़ बिन रियली रियली ब्यूटीफुल। एक तो इस साल मेरी एक और लाइफ का बहुत बड़ा माइलस्टोन हुआ, मैं उम्रा करके आया पूरे परिवार के साथ। तो ये साल बहुत खूबसूरत था। सर ने ना कमेंट किया था मेरे पेट अंदर लगा और तरला जैसी पिक्चर करेंगे तो मैं और खाता रहूंगा। अच्छा, you said तरला जैसी। Yeah, because if you have watched that film और ऐसे सीन से सर तो सिर्फ खा ही रहे, वो टेस्ट कराने जा रहे हैं और सब खा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन है वहाँ पे। मैं जब खा रहा था तो जो लाइटमैन और सब थे ना, सर जल्दी करो, भूख लग रही है, हमको भी भूख लग रही है। सबके मतलब राल टपक रही थी सबकी मुंह से। ठीक की बात ठीक। आई हैड सम 10 पोर्शंस ऑफ नल्ली निहारी। और उसके बाद लंच भी किया। time in my life when I feel like I want your job. You need 10 nothing. I had a great year, touch wood. I started by getting married. Congratulations once again. Not an achievement really, but No, it's a happy news. Such an It's an achievement, yo. यही समझ के चलो। And those pictures are so beautiful. बात है तो ये। Wedding photos are so beautiful. Thank you. Then won my first film fair. Then did one like Half Love Half Arrange, shot it and it came out, got great reviews. Did one film, like lots good stuff happened. Traveled a lot. So yeah. But coincidence ना शादी हुई और ना सीरीज कम जहाँ पे शादी की बात चल रही है। Correct. कि शादी करूँ या ना करूँ। Yes. I think 1,000 crore. Okay, yay! I think for me it's like a year. I look at it like it's the beginning. That's what I see it as. That it's the beginning of what I can do. It's like 1% of मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ, उसका 1% हो गया है. Like I say, it's been like I've been saying everywhere. It's like an audition year. बहुत ऑडिशन दे दिए, बहुत शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ मेरा ऑडिशन था. So good year. Yes. Of course.
2023 for me has been a year of incredible learning. मुझे इस साल realize हुआ कि जो सीखा था वो वापस सीखना पड़ता है, and that was personally. So I've had a very fulfilling year just understanding who I am as a person, and it's been an excellent year that way. But professionally यार फर्जी आई, उसके बाद the trial came out, and now Sheher Lakot. So yeah. I've had a professionally extremely touchwood successful year. And I made my debut as a host. And Filmfare OTT, we did that together. मजा मजा आ गया, मजा, बहुत बहुत अच्छा साल, very good. Right. You know, जैसे हमारी बात हो रही है, let me tell you, जो कुब्रा क्यों मुझ पे इतना पॉइंट कर रही है, is about me not watching one of her series. मैंने बाकी 2 पूरी देख ली है, third वाला थोड़ी बाकी है मेरी. So I want to ask this, that somewhere on the other hand, you all are doing OTT from now so many years. कहीं ना कहीं ये लगता है कि OTT थोड़ा clutter हो रहा है, बहुत सा content आ रहा है. I'm not talking about as actors, but as viewers. कि यार लोग क्या देखें वो भी confusion में है. I want you guys to answer this as a viewer and not as an actor. I don't think so. I think I consume content. मैं बहुत फिल्में देखती हूँ, बहुत वेब सीरीज देखती हूँ, सालों से देख रही हूँ. तो जितना ज़्यादा कंटेंट हो उतना अच्छा है. इनफैक्ट आई फील कंटेंट देखना इज़ बेटर देन हैविंग सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम द वर्ल्ड. So let's watch nice fictional stories that can inspire us, make us, move something in us. So the more the better, yeah. It's great that this is the time that we're in. I completely agree that I don't think, I mean, जितना ज़्यादा content होगा उतनी ज़्यादा variety होगी hopefully. And I think there should, for viewers, there should be a gamut of options and let them choose. And because I also, again, as viewers or consumers ourselves, we also watch a lot of content, right? We consume so much. And I want a variety. I want to be able Yeah. to watch this when I feel like this, or something else when I feel like that. So yeah, why not? And of course, like, it generates work, and volume of work has only gone up since OTT. So yeah. Woo. Right. नहीं, मेरे हिसाब से तो ये ऐसी चीज़ है कि भले बहुत सारे शोज बन रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, बट लोग याद वही रखते हैं जो अच्छा है. और मतलब जो OTT की जो ऑडियंस है ना, वो इतनी ज़्यादा कमीनी है ना, क्योंकि वो टाइम नहीं They're देती है. spoiled for 10 choices. 10 मिनट में अगर आपने उसको एंगेज किया तो वो आगे देखेगा, वरना मूव ऑन टू अनदर शो और फिल्म या जो भी देखना है. हम भी वही तो करते यू हैं हैव ना, टू बी yeah. एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, और मतलब उस शो को, मैं शो की बात कर रहा हूँ, ताकि लोग देखें और एंजॉय करें. और बाद में भले 100 शोज आए होंगे, लेकिन लोगों को वही 10 या 15 शोज याद रहते हैं जो कि जिन्होंने कुछ मार्क छोड़ा है, या तो बनने दो, जितना अच्छा बन रहा है, Yeah. हम लोगों को काम भी मिल रहा है. हाँ, ये बात सही है. But I also feel कि हमारी जो audience है, even me included as a viewer, हम बड़े लालची हो गए. We want more also, and we have opinions about everything also. तो हमें लगता है कि हमने अब सब कुछ देख लिया. तो I feel at some point we've become वो आधे शाने बोलते हैं ना, वो हम भी बन गए. तो I think like we should have more and more. But I feel as an audience, we also need to understand that this is the time when we can try more. We can fail more. And every time we fail better with you. So then that's how we will be able to create the kind of content this nation requires us to, like, I don't know, fictitiously kuch dekha. Arey, wow, that affected me. It's better than watching Instagram reels. And it's better than saying, oh, mera to span of attention hi itna hai. So I feel like the audience also is evolving at this point, and it's not just Indian content. Yeah, today you have content from the whole world, different languages, different cultures. So I feel like that's good. I haven't seen more like content in OTT that I've seen now in the recent times, talking about the heartland of our country. You're getting to understand your own country through the kind of content you're watching. When I see Asterisk. I understand. यार इतना I can't मुश्किल believe you're the होता है same यार, actor. हम लोग You ऐसे acted करते हैं. so I good. did, and I love it. You feel like this, I feel like it when people watch Sheher Lakot. Thank you. Or Foundation for that matter. मैं थोड़ा विपरीत जवाब दूंगा. जी. See, last में. हो गया है, और हम एक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा काम मिल रहा है, सबको बहुत अच्छी बात है. लेकिन शारिफ भाई ने कहा बहुत अच्छा होना पड़ेगा नोटिस होने के लिए. मुझे तो ऐसा लगता है कई ठीक ठाक चीजें हैं जो ठीक ठाक अच्छी भी हैं, वो भी थोड़ी अननोटिस निकल रही हैं, because there are too many things. I love it.
हम में से किसी ने किसका काम देखा है? मुझे बताओ। अब मैं कंफ्यूज हूँ मेरे आंसर के मेरे को एक मैंने सारे देखे हैं। नहीं, मैं इसमें कोई मैं मैं भी देख रहा हूँ। मैं तो नॉर्मल चीज जो है वो स्टेट कर रहा हूँ। पहले जब मैं टॉरेंट से डाउनलोड करके पिक्चर देखता था, पूरा माहौल बना के, मैं वो फिल्म पूरी देखता था Yeah. और अंत तक रुचि रखता था। अभी ऑप्शंस ही इतनी है कि मैं खुद भी एज अ व्यूअर आई हैव आल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट इन थिंग्स। आई Yeah. स्टार्ट थिंग्स एंड इवन if for a second I'm getting bored, मुझे लगता है कि But that is a whole different conversation. We are also on our phone. We are also like we're so diverted all the time. I feel right now because of the conversation that we are having and all that, Yes. and the variety of shows we have. Right now is the time when it's truly democratic, right? So it's genuinely in the hands of the people. Right. Like, because I started doing this as a consumer. If there's a content I don't want to see more of, I do not engage. I do not even dislike. I do not send it to someone saying this is so bad. No, I just don't. It doesn't exist Yeah, for me. exactly. So I don't engage. I don't feed into its algorithm. It doesn't appear on my timeline. In my head, it's gone. You know. Yeah, So, yeah. and that's how every one of each one of us is living. I would believe that we all have a certain, like, so many times someone says something and I'm like, I don't even know what this is because it hasn't reached me. Maybe because for whatever reason. So I think right now is the time when, if as an audience, if you like something, please engage with it. Please, like, talk about it, like, tweet, whatever. I don't know, however you do that. Yeah. But do that, and then more content. And I feel shows like Aspirants and the Welcome, Naveen. This is what we need in content. Something extra Yeah, that to does. stand out. that one pop. एक्चुअली ना क्या अभी इतना कई एक मिनट का कंटेंट इतना बढ़िया हो गया है, तो इसलिए लोगों को ये भी लगता है कि यार लोग 8 घंटे रील्स पे बिता देते हैं, Yeah. तो यू नो बिकॉज वी आर आल्सो कंपीटिंग विद दैट। Yeah. और मेरे को तो ऐसा लगता है हिंदुस्तान में बहुत अच्छी कॉमेडीज नहीं बनती हैं क्योंकि सब इंस्टा पे ही कंज्यूम हो रही है। इतने सारे Have you इन्फ्लुएंसर्स जो watched एक्चुअली दे वेरी Papa? गुड। मैं कल ही धारणा से मिला था। धरना हाँ धारणा Oh, she's so good. शी ओ सो गुड। खतरनाक Tell me her he's a Instagram content is creator like अब उसके से की चीज superb आप है इंस्टाग्राम पे ऐसी देख रहे हो, superb है वो तो यू नो तो now we competing with Oh yeah, dance. Every dance. Yeah. see if you go to Delhi weddings or Punjabi weddings now you'll find all mummies mausis they're all doing what Dharna is doing in those rooms। She's मैं bang तो on. अपनी बहन और माँ को फॉरवर्ड करता हूँ। नहीं मैं ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना मैं उनको सल्यूट करता हूँ क्योंकि वो लोग अपना काम खुद बनाते हैं। अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो ठीक है मैं खुद बनाऊंगा। But Sharib, it's like हमें नहीं था ना वो चांस, हमने ऑडिशंस दिए। ये सब ऑडिशंस ही तो हैं। I feel like creating content is making. We went and did scene work and auditions. I feel like Instagram is full of auditions. They're workshopping live. Yeah, and they also make money and then अरे। so it's great. But It's great time. अब जो भी रीजन ऐसे बन गए हैं तो अब तो वो करना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है यार। Yeah. वो मुझे बड़ा हाँ, difficult क्या- लगता है यार। I mean, not difficult. If we put our mind to it, we can do it. But अरे कितना माइंड मेरे को करना ही नहीं तो हाँ, exactly. You don't want to do it. You don't want to do it. That's what. But you can do it. It's है तो at the end of it all, we are all creative people. We'll do it. No, we are not spoiled. we are not We are spoiled. collaborative. हमको नहीं देना। Because I remember when during lockdown I had to shoot something. We are collaborative. We are not spoiled. मैं तो I'm very spoiled. I'm telling you, during COVID I had to shoot something and I was just like, how do content creators do this? They are their own makeup people. That's stylists. very difficult सब यार, कुछ I can't do it। शूट भी खुद कर रहे हैं सब कुछ। मैंने जिंदगी में घर से ऑडिशन नहीं भेजा। मैं खुद को ओके नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा I can't send this face। You can't look at it and I go, mean I'll have to take a shower, I'll have to set my hair, I can't। तुम्हें कोई हक फिर नहीं मैं है। छोड़ूंगा नहीं मेरे को ये रोल ही नहीं करना। मेरे को ये रोल ही मैं नहीं इतनी करना। सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है। दूसरा क्या है देख के तभी मैं सेट वीडियो से चेक नहीं करता। I never go and check because I get distracted by my physical presence। I'm very irritated with myself. But yes, And other things that shouldn't bother you start bothering you because you're like, why am I doing this? बट ये सेल्फ टेस्ट है बड़ा त्रास। जो जाकर कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मिलके जो वो करने वाली चीज होती है ना उसका अलग। कोई आदमी हमसे सवाल पूछने वाला है उसके जवाब तो दोस्तों को बुलाओ। I really thought you were staring at us saying, when are you going to stop talking? Yeah. Wants us I to talk. swear, yeah, just let me ask my question. अच्छा बाय द वे एक सेकंड उसका नाम ना धरना नहीं है धारणा है, धारणा। कल पता लगा
आपको तो लिखती अभी धरना पता है। I तो just know her as Dance Didi. आज मेरी उसके बारे में धारणा बदल गई। हाँ मैंने भी कल यही जोक्स मारे थे। हम दोनों का बर्थडे एक दिन के फर्क में है। मैं 25 जनवरी या जब 26 जब जनवरी इनकी वाइफ का आता है उसके 5 दिन बाद इनका आता है और उसके एक दिन बाद इनका। आपके बर्थडे में तो छुट्टी होती होगी सबको। वही तो, मैच मैं एक दिन से रह गया यार, मेरी अम्मी एक दिन रोक लेती। Guys, I just want to tell all of you, it's out of context, but there is a special humor which only belongs to actors who are working on set. ये बस उन्हीं, and it's very close to dad jokes. So now you can understand what most of us have to live with people who crack stupid jokes. So इन दोनों को सेक्स अपील कुछ और है भाई। that's what I mean. Humor sells, baby, humor. हम सेट You पे both सेक्स are अपील damn लेके आते हैं। आप लोग सेक्स अपील लाती हैं, हम सेक्स अपील। अरे यार हम भी सेट्स अपील लेकर आते हैं। जो क्या मारा हमने नहीं नहीं। It's okay. You said no. I was कोई trying हाँ to ओ say अच्छा Right. So now I want to ask that when you guys started, you know, कहीं ना कहीं सबने एक छोटे रोल से शुरुआत की थी. People still remember you as Ready Ki Maid. You did right now, of course. Jawan, Kaveri Amma has become very famous, of course, and even Shaheen. I think both the movies wouldn't have been made without that character. You know, I remember you in No One Killed Jessica, of course, and sir, आपने तो शाहरुख खान sir के साथ काम किया था शुरुआत में. You, of course, after I think you have mainly played kind of lead roles. अभी छोटा सा रोल किया था सपना versus Everyone में. मैंने भी छोटे अभी आजकल ही अभी छोटे रोल्स करते हैं। शुरुआत में लीड से की थी। स्पेशल अपीयरेंस Yeah, मेरा question यही था कि कहीं ना कहीं somewhere do you feel कि now it's like not about the length of the role, it is about the quality. And are you guys ready, like even in OTT space, अगर आपको मिलता है कि you know एक छोटा रोल भी है but important है, you guys will do it? Absolutely. I don't think the length of the role matter to me, and that should never matter if you're an actor. That is one part. I mean, आप रील बना रहे हो खुद की 1 मिनट, अगर वो 1 मिनट आपको किसी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिले, अच्छे एक्टर्स को एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले, और अगर उस दिन के 8 घंटों में आपने कुछ सीखा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. बिकॉज आई फील लाइक दैट इज वेयर यू आर गेटिंग लाइक दी I get paid to be on set and learn a skill set that I didn't have the opportunity to learn at school or college or in an environment formal that environment, motivated us to come together and ideate with each other. That's what school is supposed to do, right? So मेरे लिए it's very exciting because I am on set and I'm learning behaviors, I'm learning attitudes, I'm learning the law of the land, the way it works. So for me, it's not about the length. It has never been, and I hope it continues to be that way. मैंने फैमिली मैन के बाद स्कैम किया जिसके अंदर आई जस्ट हैड वन सीन, और वो सीन से मुझे जो प्यार मिला है, और वो सीन फर्स्ट टीजर में वो पूरा सीन उन्होंने डाल दिया था, तो वो लेंथ एग्जैक्टली हाँ Third one, yeah. या हाँ मेरे तो सॉरी बोलो नहीं वही मैं कह रहा हूँ अभी जिस शो की आप बात कर रहे हो इट्स अ यूट्यूब शो किसी कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है बड़ा बट आई लाइक द स्क्रिप्ट आई लाइक द पार्ट इट्स लाइक वन सीन इन एवरी एपिसोड इट्स दैट स्मॉल अ पार्ट आई हैव डन हालांकि मेरी शुरुआत भी बैकग्राउंड एक्टर की तरह ही हुई थी शंघाई करके एक फिल्म है दिवाली में ओह यस बिफोर सुलेमानी कीड़ा आई हैव डन अ वेरी स्मॉल पार्ट इन शंघाई तो हाँ मैंने भी छोटे रोल We're Anurag babies. No, Shanghai is not Dibakar. इमरान हाशमी and मैं तो एडी था पूरा एलएसटी शंघाई Oh. तो वो रोल भी मुझे जोगाड़ से ही मिला एडी नहीं, तू तो एडा है। for me also, Actually, I mean, I was in a steady, 9 to 5 sort of a job. So, मेरे लिए when I became an actor, in itself was like I want challenges. So, role बड़ा हो छोटा हो, I mean, I just did Jawan. I don't think anything more can be said than playing somebody who's thrice your age. So it's challenging and that's why I'm acting. If it's not challenging, then I'm not interested. If it's one scene and मुझे कुछ impact करने का मौका मिलेगा, like what Sharif did in Scam, it's amazing, and you move from project to project. Like she said, you learn, you adapt, you see how people are, you see the world, I think एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हम बहुत intellectualize कर देते हैं चीज़ों को, but an actor and a creative person, we are always living and breathing what we do because we are always observing people. Life is our biggest playground, and we just get to put it out there when we get a job.
So we are तो like hungry. हमें you know like she said we've not learned it or we don't come from families जहाँ ये बातें होती हैं या हमें templates पता है किसको कैसे deal. We don't know all that. So the more chances we get to do things, you know, the better it is. And I think because of those chances we are sitting here with you, right? Because we took those chances. You all went to school. No. Huh? None of us went to school. No. You went to school? Not acting school. छोटा स्कूल वो तो मैंने भी किया. Workshop. हाँ, I mean, नहीं हाँ ऑन द जॉब ही सीखे हैं हाँ सब ऑन द जॉब गागरू से बहुत कुछ सीखा है गगरू से Like, I feel that it's like it's all, which I keep telling people also. It's better to be a working actor than just sitting at home and calling yourself Yeah. an actor. And especially आज की date में when there's so much work happening and you won't, like Kubra said, you won't learn. I mean, not in as many words, but like your set is your biggest school. Like the kind of stuff you learn being on set. Even if you have I tell people to just hang out, go on a set Yeah. and just hang there. Like, you know, because they were saying that we're not from the industry. We don't, like, we learned on the job how to be on set, what it means to be on set. Like, what is it, you know, like, where's the lights and camera and just the overwhelming presence of the set, you know. So we've learned all this. And yeah, so I think it's important to, as long as it's impactful and as long as there are other factors also that kind of fall in place, because a lot of times with small roles comes bad treatment. So as long as that is taken care of. Yeah, let's talk about battery. oh God, You wanna? No. Go for it. come on. Finish your answers, guys. Next question. One second, I want to do this since he did this. He. Oh. No, आप लोग नहीं आप लोग कर लो अपना मोहब्बत है हम लोग कर रहे हो. होती तो मैं ऐसे ही करता यहाँ पे बंदे माइनॉरिटी में हैं इट्स नॉट मेन और वुमेन वाला थिंग Yeah, okay, whatever. नहीं वो ऐसा अपना कुछ ऐसा. बैटल ऑफ Not सेक्सेस saying men or women. Yeah, everything is getting explained. Users and all. Yeah. सेट्स के अलावा ऑन द जॉब के अलावा मैंने तो ऑन द ऑडिशंस मैंने इतना कुछ सीखा है ना. मैं 3 साल में सिर्फ ऑडिशन दे रहा था जब काम नहीं मिला था. बट उन 3 सालों में मैंने जब भी मुझे ऑडिशन कॉल्स आते थे और अगर एक दिन में 3 ऑडिशन देने जाना है, मैं आई यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट कि यार आज मुझे 3 कैरेक्टर्स करने को मिलेंगे. मैं ऐसे चाहता था कि मुझे जॉब मिल गया है, भले मिलता नहीं था लेकिन मैं उतने एक्साइटमेंट के साथ में मैं ऑडिशन देता था. और ऑडिशन हम एक्टर्स का रियाज होता है क्योंकि हम कहाँ पे क्या करने जाएंगे और कोई एक्सरसाइज हमको नहीं पड़ती. जिंदगी भी रियाज ही है पूरी. तो मैं इनफैक्ट जो आपने बोला कि हम तो हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, मैंने भी शबाना आज़मी जी का एक इंटरव्यू देखा तो वो पढ़ रहा था तो उसमें वो कह रही थी मैं एक फ्यूनरल में गई थी और वहाँ पे जिस तरीके से लोग बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से मतलब मैं ये और वो उनके किसी क्लोज रिलेटिव का फ्यूनरल था बट वो सोच रहे थे कि ये चीज़ मैं किसी फिल्म में यूज़ करूँगी. मैं बोला यार ये तो मैं भी सोचता हूँ. When I'm crying in a real situation, like I'd be fighting with Yeah, someone same and here. crying, I make mental and notes. suddenly, yeah, I look in the mirror कि मैं कैसे याद रखूंगी मैं. remember this is Adi crying. I do this too. Now you guys know. Yeah, but that's why we. But that's why we are. It's We. messed up. That's why I'm very conscious. we are actors. When I'm in a real moment, it's lives when are like- oh this one. Yeah. Yeah. तो इसीलिए तो ऑफ है ना हम एक्टर्स इसीलिए. मैं तो कई बार We are always out of body, हाँ looking at ourselves. मैं कह रहा हूँ मैं बहुत फनी सी बात है मैं तो कई बार ना सॉरी इट्स वेरी embarrassing We'll It's decide okay. one So Yeah, many we, things. yeah, we'll decide if it's fun. मैं कई बार अपने इंटरव्यूज भी देखता हूँ तो मुझे लगता है यार इसमें कितना नेचुरल बोल रहा हूँ मैं नेचुरली लाइक बोल रहा हूँ मैं Yeah. Why don't I do this on camera? ऐसी Yeah. नहीं, very natural, और उसके बाद मैं लेकिन ये और भी ज्यादा है ना Yeah. ये मतलब इसमें कुछ भी आप यू नॉट थिंकिंग अबाउट योर लाइन है ना तो मेरे को वो भी दिखता है कि यार मुझे क्या ये करना है. खुद ही को इंस्पिरेशन बना के कर रहा हूँ कि ये Superb. ये वाला सच क्रिएट कर रहा है परफॉर्मेंसेस में. Yes. My next question is, which is something where whenever I see जब एक शो का season 2 वगैरह आता है, whenever I see it, you guys are just perfect in the character that you had played in season 1. कितना difficult होता है to do that? I know that you haven't been a part of a franchise series yet. But for you guys, you did Nusrat, like of course. I'll give you the. You have to go find new work. It's okay. Every time they kill me, I'm like, काम दे दो. If Audition करवा लो. a character gets killed, you get sympathy. It's great. Yes, you did Nusrat this year. I think even
चाहे फिर वो ट्रिपलिंग हो या 4 more shots. So yeah, every time JK, I think we love that character. बल्कि I don't know, I'm saying Raj and DK, Saira and JK या कुछ बनाओ करके कुछ universe करो. हम बड़ा सीरियस रोल करेंगे, देख लेना आप, हम बड़े सीरियस एक्टर. अभी सीजन 3 शुरू हो रहा है, हो सकता है क्रॉसओवर हो कुछ फर्जी का. उसमें भी I didn't feel कि कहीं पे भी acting wise there was anything that was not proper. How difficult it is जब ये season 2 करना होता है to go into that character, because बीच में of course you have played other characters, real life में बहुत कुछ चल रहा होता है. How difficult is it? Difficult. It's actually easier. It's easier because आपके पास you have your skeleton of the character, you have lived the character, तो आपने develop किया होगा, आपने back story बनाई होगी, writer director के साथ बैठे होंगे. Season 2, if there's a season 2, it only helps because now you add more things to the character. You're like, अच्छा वो चीज़ ऐसे develop हो गई है, so it is actually. I think the problem is that जब time gap होता है, like Asur 1 and Asur 2, we shot Asur 1 2018. 18 and right, and Asur 2 was shot in 2022 or 21, I don't 22. Yeah, so it was after lockdown, and in the story हम बस 3 महीने के बाद आ रहे थे, तो वो बहुत मतलब just to wrap my head around it for the first 10 minutes was like, oh my god, okay, let's get back to this. और सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, but other than that the character is well cushioned. You just have to step into it, make it better, I feel. I'm तो having said that, like this is true, but जैसे ही मुझे पता लगता है that there's another season happening of whichever show, I start panicking because I feel like, oh my god, I've forgotten it, what this character was, I forgot. कल हुआ मेरे साथ, कल I was talking about this, like another season of something I've done, and I literally, like, I could feel my breath was getting shorter, and I was like, okay, I'm getting anxious. And that's good. So that's what, it's good because I've seen it in the past turning out to be positive, but every time I'm in that position, I'm just like, oh my god. Which one it is? Tell us. And if you kind of get in that process again, script jab aati hai, then you start reading it, and you're workshopping, meeting, and then everything just like, then it feels like, why was I panicking? Why was I so scared? But I get that like butterflies in my stomach. मेरे लिए तो मतलब जेके प्ले करना बहुत मतलब इन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहा है. और जब फर्स्ट सीज़न को जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया और हमने वो कैरेक्टर काफ़ी मतलब अच्छे से सेट कर लिया था. जब फर्स्ट सीज़न रिलीज़ होने वाला था, उसके पहले हमने एक मेजर शेड्यूल सेकंड सीज़न का भी कर लिया था. तो हम तो बहुत उसी फ्लो में बह रहे थे. और लोग जब सेकंड सीज़न आने वाला था, लोग पूछते थे कि इस बार आप क्या अलग करने वाले हैं. बोला, अलग क्यों करूँगा मैं, कैरेक्टर है, मौसम थोड़ी कि अभी बदल जाएगा. और क्या, तो जो कैरेक्टर है वो तो बेसिक तो वही रहेगा ना, उसमें चीज़ें अलग होंगी, सिचुएशंस अलग होंगी, और तो उसके हिसाब से हम बिहेव करेंगे. कैरेक्टर तो वही रहेगा. एक्चुअली साल सेकंड सीजन हुए हैं, तो Aspirants, एस्पिरेंट्स और पिक्चर्स, मैं दोनों में ही बहुत वरिड नहीं था टू डू व्हाट आई डिड इन द फर्स्ट सीजन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दोनों ही सीजन्स में लकीली मैं कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था. और मेरा कैरेक्टर जैसे अब सीजन 2 पिक्चर्स का जो था, I'm assuming people who are watching, they have seen it, and if they've not seen it, they're not going to watch it. तो उसमें नहीं यार, अच्छा है. a lot of people have left me. No, like he means अब तो नहीं देखेंगे. A lot of people have left me. I'm in a new world. तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा था कि सीजन 1 वाली मेरे को कोई चीज़ रिक्रिएट करनी है. I just had to create these moments. मुझे इन मोमेंट्स को सच्चा बनाना है, और जो राइटर्स ने काम किया हुआ है उसको रहते हैं. और एस्पिरेंट्स 2 भी मुझे ऐसा लगता है कि डीएम की स्टोरी ज़्यादा है, और डीएम हमने सीजन 1 में नहीं एक्सप्लोर किया, और मैंने खुद डीएम इस सीजन में ज़्यादा बनाया है. तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि मतलब हाँ, हो सकता है मेरी काम एनर्जी रिपीट कर रहा हूँ, बट द कैरेक्टर वाज क्रिएटेड इन द सेकंड सीजन अकॉर्डिंग टू मी, एंड हाँ, वो तो अब राइटर्स ने वर्ल्ड इतना रियल बनाया कि फॉर पीपल they can see कि हाँ, this guy can actually go there. So yeah. एक्चुअली दोनों सीजन्स में ये दो अलग Season 1 was more about the past Abhilash. हाँ. This was more about the present Abhilash. Yeah. आपने तो देखा है ना Kubra. But even in this you had throwbacks. Like, yeah. So that's where, and I was wondering how hard it must have been for you to go back into like the guy who has, like failed
you know, so this is your last attempt, this is your do or die situation, and then you're there in that position where you've achieved everything, and those are two different mindsets. I also felt in 2 seasons. So it was very interesting for me to watch. Yeah, there were 4 characters. मतलब अभी का भी past was very different from पिछली बार का past. Yes. Also, you're Yes. a hero, man. क्योंकि वर्ल्ड ही बदल गया इसका. अभी दोस्त Yeah. नहीं है तो मेरे ख्याल से सिचुएशन बदल जाती है तो आप रिस्पॉन्ड अलग तरीके से करते हो. तो देन यू डोंट रियली हैव टू थिंक अबाउट कि क्या मुझे रिपीट करना है सीजन 1 से. आई थिंक ऑफ कोर्स कुछ कुछ तो रहेंगी. I love that hesitation that you had with Heria in the show. And because I'd watched Aspirants a long time ago, season 1, when season 2 happened, I was like, oh, should I know what I'm going to pick up from as a viewer? But I didn't, because the writing was so clear, and the emotions and the dependency on each other's character was so well established and spoken of in your lines, and I feel that's where it, you know, becomes so much easier to do a job as an actor, because your writers have taken so much care of it, and I don't think we credit our writers enough. When you talk about a content heavy show, Yeah. like most of us have been a part of, why does Tippling work after 3 seasons and still you have something to take away? The writing is great. Or a show like Kala Pani or Aspirants. Dipesh Or Sheher Lakhno Dipesh is the guy. tell you that the writing is Dipesh. great. Dipesh is the guy who wrote Aspirants too. बहुत सुपर है दीपेश. Superb, yeah. मिलवाऊंगा मैं कभी आपको उनसे. Would love that. Also, as we are talking about season 2s, जैसे असुर took a long time to come. ठीक है, एस्पिरेंट्स भी आई रिमेंबर मैंने अभिलाष का बीच में कहीं इंटरव्यू किया था और मुझे नीचे सिर्फ कमेंट्स आ रहे थे व्हेन आई हैड मेट यू आई थिंक फॉर लक्कड़ बग्गा अर्लियर दिस ईयर, तब भी मुझे नीचे कमेंट्स आ रहे थे असुर 2 का कब पूछा कि नहीं आपने. नाउ दिस इज द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट आई गेट. ये ज्यादा से ज्यादा 5-10 होंगे. यू गाइस हैव लाइक मिलियन फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया. हाउ डू यू टैकल दैट जब लोग नहीं guys, मेरे को आइडिया नहीं है. मेरे 1 million के मेरे उसके नीचे. मेरे 1/4 of a million. It is not 250 important. है. मेरा 500 Oh है. my god. मैं 500,000 है. क्राफ्ट मेरा. मैटर करता है, ठीक है. मेरे को वहां तक की नॉलेज है. लैक्स हाँ? लैक्स बोल दिया मैंने चेंज कर दिया. नहीं मिलियंस भी ठीक है. हमारी तो एस्पिरेशन नहीं है ना. हाउ डू यू टैकल दैट जब ऐसे लाइक लिटरली फैंस पीछे पड़ जाते होंगे सोशल मीडिया पे भी. इट्स लवली, इट्स अमेजिंग यार कि वो हमसे हमारे कंटेंट के बारे में जानना चाहते हैं. उससे ज़्यादा और क्या चाहिए. आई मीन उसको ज़्यादा सोचना उसके बारे में इज क्वाइट स्टूपिड. वी एज एक्टर्स आर सो ग्रेटफुल कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर जस्ट वांटिंग टू सी अस. एंड मेरे लिए तो ये पूरा साल मैंने वही देखा है दैट मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट ऑनलाइन ही या जब भी मैं बाहर जाती हूँ लोगों से मिला है, दैट हैज़ बिन माई स्ट्रेंथ. इट्स ऑलवेज बिन माई स्ट्रेंथ इवन व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन. But that's been my strength always. On days and weeks and months when phones don't ring, when you don't know what to do, when you yourself have to pick yourself up and figure out क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो लोग कितना आप में कितने invested हैं, या वो they send you that strength कि I hope you're like okay I can't sit back, I can't there's somebody who likes my acting, so okay Riddhi, you don't have a reason to excuse to sort of give up on yourself. तो इट्स ग्रेट यार, बहुत अच्छा लगता है कि वो पूछते हैं और जानना चाहते हैं. आई मीन जब मैं पिक्चर्स 2 के लिए भी बैठी थी तो वहाँ पे एवरीबडी वाज लाइक फाइनली पिक्चर्स 2 इज कमिंग आउट एंड देन असुर 2 कब आ रहा है. इट वाज अ ग्रेट फीलिंग. इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग. People want to know when Sacred Game season 3 is. या एग्जैक्टली Exactly. नहीं बना रहे हैं यार. वो अब तो अदर ट्रायल सीजन 2 भी पूछ ही रहे होंगे. ट्रायल का भी पूछ रहे हैं, फर्जी का भी पूछ रहे दैट्स हैं. ग्रेट. इट्स अमेजिंग. बनेगा 100% बनेगा. पहले फैमिली मैन सीजन 3 बनेगा. फैमिली मैन सीजन 3 उसके बनेगा बाद पहले. प्लीज क्रॉसओवर वहीं से शुरू कर दो यार. I'm missing Rajan DK a lot यार. मैं बहुत मिस कर रही हूँ उनको यार. मैंने तो उस दिन DK को फोन कर लिया यार. बर्थडे भी था ना अभी रिसेंटली, मैंने फोन भी किया था यार. I'm missing you यार. परसों ही. ये अच्छा है. Right. I just want to ask you this. I think last time हमने बात की थी रिद्धि when I was there for बदतमीज दिल. I wanted to ask this कि कहीं ना ये अभी तक शायद से Sacred Games शुरू हुआ था. That was kind of a pioneering thing for Indian web series that happened. Like till now, there's this debate about कि OTT पे censorship रखो. What is your take? Yes, it is. Like I mean, just earlier this year at one of the press conferences, Superstar said that that he thinks that there should be censorship on OTT. What do you have to say on this? Nothing. I think you have a very good rating. I have system. censored views on this. AUA, PG-13, PG-18. I think that's good enough
for the audience to be smart enough to Exactly. decide what do Yeah. they want to watch and what do they want to show their children. Yeah. Why, dude? I love watching animated series. I love watching animated movies. वो तो बच्चों के लिए बना रहे हैं ना. मैंने तो इतनी सारी चीजें सीखी हैं animated things से. तो if you're a certain age and your mind is evolved to understand, like, okay, since we're talking about censorship, this is something that I randomly thought of when I saw the poster of Oh My God 2. मैंने फिल्म देखी है और मुझे नहीं समझ में आया कि उस फिल्म को अडल्ट क्यों दिया? क्यों दिया I haven't seen it. पूरा पर्पस I haven't seen it. इतनी खूबसूरत फिल्म मैंने बनाई 1 है। देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी. बहुत अच्छी फिल्म ये थी। भी बहुत अच्छी है. हाँ मैं तो रैंडमली पहुंच गया और मैंने कहा हाईलाइट तो बहुत Yeah, अच्छी फिल्म है एंड उसके yeah. बाद मैंने आपका इंटरव्यू देखा. वो मैं तभी खुश हो गया कि आखिर किसी ने बातें कर दी You know this I'll share. मैं थिएटर में गया था कोई और मूवी की टिकट्स लेने और मेरे पीछे लिटरली देयर वाज अ कपल विद अ 12-13 ईयर ओल्ड डॉटर. उन्होंने ओ माय जो 2 की टिकट ले ली थी थिंकिंग कि अडल्ट नहीं होगी एंड नाउ थिएटर पीपल आर नॉट अलाउइंग द डॉटर. सो दे आर वो पीपल स्टैंडिंग के हमें पता नहीं था अडल्ट है किसी को चाहिए क्या. दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस बिकॉज OMG 2 is a franchise and I think जब ट्रेलर भी आया था तो ऐसा नहीं लगा था कि कुछ होगा. So yes, I think what she pointed out is really correct, you know, and I remember talking to someone else also from the films team कि ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है. I was just there. जोल जब से स्टोरी टेलिंग चल रही है, ये सेंसरशिप, जब मैं घर पे बैठ के इंटरव्यूज देखती थी तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेंसरशिप. नाउ Because that's what I'm saying. Yeah, till the time when this conversation about censorship and the answer is always let the people decide, let's give credit to their intelligence. वो लोग इंटेलिजेंट हैं और उनको डिसाइड करने दो वो क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं. either they will regret watching something or they will enjoy watching something or they will not miss anything. Like she said that if I don't want to watch something, I don't indulge in it. Simple. No, also films have been censored, right? For Yeah. ages now. Is there has that made a difference? I mean, I just want, we have two models in front of us to compare. So I don't know if the policymakers should do it. It's not my job to. But like, has censorship helped? Then because then if you're talking about censorship, then you have to discuss what stuff to censor. You know, because what is correct? Because misogyny is still very rampant in all the content that you watch. That is no one is talking about censoring that. And they shouldn't. I think nothing should be censored. I come from the view that nothing should be censored. There should be certification, yes. Like you were saying that there should be age appropriate certification and allow the parents or the guardians or whoever to decide. And there should be execution of that age limit in theatres, because again I think that's somewhere we lack. That I know, and like so many young people just will go watch an 18+ film. So all of that, as long as then I don't think we need censorship, and maybe censorship should be started at education is what we should focus on rather than. Very good point. Yeah. But these points have been raised since Yeah, we've been talking 30 years. लॉन्ग टाइम हमारा क्या काम है, हम तो ऐसा हम भी round table उसमें में ऐसा मैं puff puff खा के उसमें मिलते add हैं। कर रही हूँ in हम that तो यही बोल रहे हैं, voice. इतने साल से बोल रहे हैं. जैसे शोले जैसे शोले का क्लाइमैक्स था, उसके 2 वर्जन्स थे. पहला वाला जो वर्जन था उसमें गब्बर इज किल्ड ब्रूटली, मतलब खून उसको मार के वो कर देते हैं. तो वो सेंसर ने वो किया कि ये बहुत वायलेंट है, और उन्होंने फिर उसका दूसरा वर्जन निकाला कि भाई पुलिस भी रहती है यहाँ पे, और वो आते हैं और उनको जब वो लास्ट पैर जब वो मारने वाला होता है तो वो पुलिस आकर पकड़ लेती है और उनको गिरफ्तार करके लेकर जाते हैं. तो सेंसर तो तब से मतलब कुछ ना कुछ चीज़ बातें तो तब से हो ही रही हैं कि वायलेंस. का फायदा नहीं हुआ यार. इतना बेड़ा कर सोशल मीडिया ने कर दिया अभी. क्या हाँ, ऐसा है जो क्या क्या ऐसा है जो नहीं देख सकते आप. और क्या ऐसा है जो देख सकते हैं आप. This is very good point. Who's listening to us? no, I think actors should be heard. I think I really like education में should be देश तो और ही बिगड़ गया. तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ सेंसरशिप से? इससे अच्छा जिसको जो करना नहीं यार, कुछ फायदा होगा. हम लोग तो एजुकेटेड हो गए कम से कम. बस एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो भी आप बना रहे हैं. उसके अलावा मुझे नहीं लगता एक If you're civilized and you're in a civilization, responsibility lies with the citizen. And वो मतलब एक civilization ही खत्म हो जाएगा अगर आप ये शुरू कर देंगे कि हम डिसाइड करेंगे आप क्या देखें और क्या नहीं देखें. तो सर्टिफिकेशन He just took a call. He took a call. So yeah, have a shoot after this.
You came late for this. You will be late for the shoot also. Fine. नहीं मैंने से देखा ना. माहौल बना के देखा है ये कंप्लेंट किए थे क्लास मॉनिटर. हाँ, ये तो इन्होंने इंटरव्यू में फोन उठाया है भाई. मुझे कट करवाना ही पड़ेगा वो पार्ट. ये तो ऐसा While she was talking. फोकस डोगरा पे होगा ना. आप जब एडिट करोगे डोगरा पे फोकस होगा. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये She was the one, she said नहीं वेट करेंगे हम नवीन का वेट करेंगे. She was actually. Yeah. हाँ. नहीं, और मैंने बोला ये तो he doesn't इन्होंने deserve इंटरव्यू बोलने में फोन दो, उठाया सारी ना. हाँ, इन्होंने इंटरव्यू में फोन उठाया. एक प्ले चल रहा है, हाँ मुझे याद है. गुजराती प्ले, और काफी नामी एक्टर हैं जो उस वक्त नसीर स्टेज पर. नहीं पंकज सर. तो नहीं तो प्ले चल रहा था और अचानक फोन की घंटी बजी तो उन्होंने फोन उठाया. तो उन्होंने उठा लिया. हाँ, हेलो शोमा छू. ओके. उसके बाद में रख दिया. ओ मैं तब भी बीच में इसकी स्टोरी बताई. नहीं इनकी नहीं, एक और एक्टर काफी. This was important. No problem. Are you getting late for your shoot? No, everyone. He is the most forgiving, at least in this. Nah, because yeah.